कि आईएनएस वेला निर्णायक प्रहार करने के लिए घात लगाए तैयार बैठी है। Denizens of the deep, submarines symbolize the pinnacle of destructive power. These submarines can attack enemy ships, hostile submarines, and even targets on the enemy's land. సముద్రంలో నివసించే ఈ జలాంతర్గామి Flares, the submarine Vela is commanded by Commander Kapil Kumar. समुद्र की गहराई हूँ, मैं काल रूप इकाई हूँ, पल में अदृश्य पल में प्रत्यक्ष, कभी चूकता न मेरा लक्ष्य, गौरव की गाथा लाई हूँ, नौसेना की अनुयायी हूँ, मैं काल रूप इकाई हूँ, मैं समुद्र की गहराई हूँ। देवी और सज्जनों, जोरदार तालियों से आईएनएस वेला का अभिनंदन करें। गहरे समुद्र में उद्यम करने वाली पनडुब्बियां विनाशकारी शक्ति के शिखर का प्रतीक हैं। ये पनडुब्बियां दुश्मन के जहाजों पर और मौजूद ठिकानों पर भी हमला कर सकती हैं। Ladies and gentlemen, let us have a huge round of applause for INS Vela. Approaching the grandstand from the right is a Seeking 42 Charlie helicopter being piloted by Commander Yuvraj Kumar and Commander Mahesh. The helicopter will carry out a highly coordinated maneuver as it will insert a team of Marine commandos behind enemy lines. This evolution by the Marine commandos is being conducted by Lieutenant Commander Utkarsh Katiyar and assisted by Kishan Kumar, Master Chief Petty Officer. కుడివైపు నుండి వేదికను సమీపించిన సీకింగ్ 42 చార్లీ హెలికాప్టర్ని మనం చూస్తున్నాము. దీనికి నాయకత్వం వహిస్తున్నది कमांडर युवराज कुमार మరియు कमांडर महेश. देवी और सज्जनों, आप देख सकते हैं मार्कोस तेजी से जेमिनी पर स्लिदरिंग कर रहे हैं। ये न केवल हेलीकॉप्टर पायलट से अत्यधिक सटीकता की मांग करता है, बल्कि मार्कोस की तीव्र गति को भी दर्शाता है। इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं आशिम डोले, चीफ एमी, और अजय, लीडिंग सीमैन, मरीन कमांडो। जोरदार तालियों से इनका उत्साहवर्धन करें। Ladies and gentlemen, you can watch the advanced light helicopter being piloted by Commander Subrat Tripathi undertaking the demanding task of providing aerial cover, ready to engage and neutralize any hostile targets. హెలికాప్టర్లు ల్యాండ్ చేయలేని చోట మరీన్ కమాండోలంతమైన చర్య కూడా అవసరం. Ladies and gentlemen, approaching you from the front are 4 Gemini. They're simulating a combat beach reconnaissance and assault. The assault mission is being led by Sudhakar Chauhan, Petty Officer, Clearance Diver, and being assisted by Narendra C1 and Omkar C1. ఇప్పుడు 4 జెమినీ బోట్లు మన వద్ద నిఘా మరియు దాడిని అనుకరిస్తాయి. वर्तमान में वे फ्लैश फायर कर रहे हैं और दृश्यता में आसानी के लिए स्मोक मार्कर्स जलाए हुए हैं। वास्तविकता में ये ऑपरेशन गोपनीय रूप से और रात के अंधेरे में किया जाता है। ఈ ప్రదర్శనలో వారి ఉనికిని These inflatable assault boats are used by intrepid commandos of the Indian Navy, the Marine Commandos, who belong to the Special Forces Unit INS Karn. Their motto, the few, the fearless. देवी और सज्जनों, आप देख सकते हैं मंच के ठीक दाहिनी तरफ दुश्मन की एक चौकी है, जिसमें एक भारतीय बंधक है। दुश्मन की चौकी को नष्ट करना और अपने नागरिक को युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकालना इन कमांडोज का प्राथमिक लक्ष्य है। दाहिनी तरफ से जल्द ही आप 2 लाइट सपोर्ट दल बंधक को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए आगे आते हुए देख पाएंगे। युद्ध का ये सजीव चित्रण आपको निश्चित रूप से विस्मय कर देगा। एक तरफ आप गोलियों की बौछार होते हुए देख रहे हैं और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि नौसेना सर्च और रेस्क्यू का ऑपरेशन कैसे करती है। ఇప్పుడు మనం భారత నావికాదళ ఆపరేషన్ను చూస్తున్నాము. इस समय मरीन कमांडोज द्वारा बंधक को छुड़ा लिया गया है और लाइट सपोर्ट वाहन बंधक को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए पोस्ट पर पहुंच चुके हैं। इन लाइट सपोर्ट वाहनों का संचालन
मनदीप पियोलॉग एवं अजय लीडिंग सीमेन मरीन कमांडो कर रहे हैं। गोलियों की बौछार के बीच सीना तान कर चलने वाले इन मरीन कमांडोज के लिए जोरदार तालियां देवी और सज्जनों। The Marine Commandos Force, also known as Marcos, was raised in 1987. It is the special force unit of the Indian Navy capable of operating in all dimensions. These naval frogmen operate in teams of 8, known as the Prahar. They are known for their ability to operate in various terrains that includes jungle, urban, and maritime environment. Marcos have been involved in several significant operations, reflecting their readiness to respond to various challenges. The Marine Commandos of the Indian Navy play a pivotal role in countering piracy in the Gulf of Aden and North Arabian Sea. देवी और सज्जनों, मंच के सामने आप इस समय जो हेलीकॉप्टर देख रहे हैं वह सीकिंग है, जो सर्च और रेस्क्यू का प्रदर्शन कर रहा है। विशेष अभियानों के मुख्य पहलुओं में से एक है मरीन कमांडोज का उनके असाइन किए गए मिशन को पूरा करने के बाद सुरक्षित स्थान पर पहुंचना और वापस निकलना। One of the key facets of special operations is the insertion and extraction of the Marine Commandos once they have completed their assigned missions. Using STY technique, Marcos are flown underslung, suspended beneath the seeking helicopter, and swiftly deployed to a designated, often remote location. This technique is suited for high-risk, anti-hijack, and counter-terrorism operations, where the helicopters can safely deliver the Marcos to strategic locations or extract them after completing their mission. The Seeking 42 Charlie helicopter is being flown by Commander Mahesh and Lieutenant Commander Akash. మరీన్ కమాండోలు తమకు కేటాయించిన మిషన్లను పూర్తి చేసిన తర్వాత వారిని చొప్పించి వెలికి తీయడం అనేది ప్రత్యేక కార్యకలాపాల యొక్క ముఖ్య అంశాలలో ఒకటి. స్టై టెక్నిక్ను ఉపయోగించి మార్కోస్ సీకింగ్ హెలికాప్టర్కు వేలాడుతూ నిర్దేశించబడిన స్థానానికి చేరుకుంటారు. ఈ సాంకేతిక హై రిస్క్ యాంటీ హైజాక్ మరియు కౌంటర్ టెర్రరిజం కార్యకలాపాలకు ఉపయోగపడుతుంది. देवी और सज्जनों, अब आप जल्द ही हेलीकॉप्टर से कमांडोज को तेजी से लाइन पर चढ़ते हुए देख पाएंगे और आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार हमारे जाबाज मार्कोस तेजी से लाइन पर चढ़ रहे हैं। जल्द ही ये मार्कोस सीकिंग हेलीकॉप्टर के संग क्षितिज की ओर अग्रसर हो जाएंगे। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें देवी और सज्जनों। Ladies and gentlemen, in a short while, you will witness an evolution by the Indian Navy clearance divers led by Lieutenant Commander Sonu Kumar Singh, in which the team will demolish a simulated offshore installation and oil rig, a vital economic asset of the enemy. ఇప్పుడు మీ దృష్టిని కుడివైపు Ladies and gentlemen, shift your gaze to the sky and give a huge round of applause to our brave Marine Commandos. भारतीय नौसेना के क्लियरेंस डाइवर्स अपने युद्ध कौशल में दुश्मन के बंदरगाहों के अंदर जहाजों और तेल रिग प्लेटफॉर्म तथा उनकी समुद्री पाइपलाइनों जैसे महत्वपूर्ण अपतटीय प्रतिष्ठानों पर समुद्र में लक्ष्य को ध्वस्त करने में पूर्णतः सक्षम है। Ladies and gentlemen, the team of clearance divers from clearance diving team have set up their explosive charges on the enemy oil rig on your left, on your right to destroy it. Ladies and gentlemen, our clearance divers have successfully destroyed the enemy oil rig. Please give them a huge round of applause. देवी और सज्जनों, हमारे क्लियरेंस डाइवर्स ने दुश्मन के तेल रिग को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया है। जोरदार तालियों से इनका उत्साहवर्धन करें।
Amphibious ships are pivotal to the Indian Navy's operational versatility, enabling effective power projection and joint operations across the diverse maritime and littoral zones. These vessels facilitate the seamless transport of troops, vehicles, and equipment from sea to shore. Even under challenging conditions, the Eastern Naval Command operates key amphibious ships, including INS Jalashwa, commanded by Captain Naushad Ali Khan, INS Ghadial, commanded by Commander Rajan Chib. Now you will witness an astounding demonstration of how the BMPs of the Indian Army fearlessly operate in the face of enemy. You can now see a platoon of 12 mechanized infantry Paramahar comprising of 4 BMPs moving forward in a tactical box formation. Ladies and gentlemen, the platoon is now under enemy fire and will adopt the fire and move by leapfrog method, wherein 2 BMPs are moving forward to launch their attack, while the other 2 BMPs that you can see from the right side of the grandstand are providing cover fire. Now you can see the rear BMPs are crossing the grandstand, ready to neutralize the enemy. BMPs can carry 10 fully armed infantry troops over rugged terrain for 450 kilometers at 65 kilometers per hour. Ladies and gentlemen, shift your gaze to the left side of the grandstand as the BMPs are turning around. And now you can see the platoon is adopting a line ahead formation to engage the aerial targets. You can see the turrets training and elevating. That's how they neutralize the enemy. And now, to await the enemy, BMP has deployed a smoke screen obscuring itself from enemy view. ఉభయచర నౌకలు భారత నౌకాదళం యొక్క నిజంగా देवी और सज्जनों, जिन लैंडिंग क्राफ्ट्स को आप समुद्र तट की ओर आते हुए देख रहे हैं, उन्हें उभयचर जहाजों द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। ये लैंडिंग क्राफ्ट हमारे थल सैनिकों को इन्फेंट्री फाइटिंग वाहनों जैसे कि बीएमपी में उतारते हैं। भारतीय नौसेना के लैंडिंग क्राफ्ट मैकेनाइज्ड पोत बहुमुखी प्लेटफॉर्म है। देवी और सज्जनों, एलसीएम फ्लैश दागते हुए मंच की ओर मुड़ रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। उन्नत नौवहन प्रणालियों और मजबूत डिजाइन से लैस एलसीएम हल्की जलधाराओं में काम कर सकते हैं, जिससे ये द्वीप क्षेत्रों और मानवीय सहायता मिशनों के लिए आदर्श हैं। ये क्राफ्ट त्वरित तैनाती, आपदा राहत और तटीय सुरक्षा अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तट पर सटीक लैंडिंग करने के लिए उनकी क्षमता ये सुनिश्चित करती है कि नौसेना भारत के समुद्री हितों की सुरक्षा और संयुक्त बलों के संचालन को समर्थन देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। Ladies and gentlemen, look up to the skies and you will see the daring Marine Commandos of the Indian Navy proudly displaying the Indian tricolor and the Indian naval ensign. These daring Marine Commandos are from INS Karn, commanded by Captain Rajesh Dhami. And now, from this breathtaking aerial perspective, watch as the Marcos leap into action from the advanced light helicopter. The on-site camera captures every thrilling moment, the wind, the free fall, the sheer expanse of the sky below. It's an immersive view, putting you right in the heart of this daring descent from a height of 8,000 feet. అందరూ ఆకాశం వైపు చూసినట్లయితే మీరు భారత నావికా దళానికి నుంచి వచ్చిన సాహసోపేతమైన మార్కోస్ను చూస్తారు. భారతీయ త్రివర్ణ పతాకాన్ని మరియు భారత నావికాదళ పతాకాన్ని సగర్వంగా ఎగరవేస్తారు. ఈ కమాండోలు కెప్టెన్ రాజేష్ ధామి నేతృత్వంలో ఉన్న ఐఎన్ఎస్ కర్ణకు చెందినవారు. जब नौसेना बलों को किसी मिशन के लिए तैनात किया जाता है तो कई बार हमें अपनी विशेष बल मार्कोस की आवश्यकता होती है
ताकि वे दुश्मन की सीमा के पीछे जा सके। देवी और सज्जनों, अब आप देख रहे हैं कि किस तरह हमारे जाबाज मार्कोस पैराशूट को नियंत्रित करते हुए लक्ष्य क्षेत्र पर सटीक लैंडिंग कर चुके हैं। जोरदार तालियों से इनका उत्साहवर्धन करें। These Marcos have jumped from an ALH flying at 8,000 feet up in the sky, as they do not fear but revel in the face of danger. The advanced light helicopter is being piloted by Commander Prashant Rai. కమాండోలు నిర్దేశించిన ప్రదేశంలోనే ఎంత నైపుణ్యంతో దిగుతున్నారో మీరు చూస్తున్నారు. ధైర్యం మరియు నైపుణ్యం యొక్క ఈ అద్భుతమైన ప్రదర్శన కోసం నావికాదళ కమాండోలకు పెద్ద ఎత్తున చప్పట్లు కొట్టండి. कॉम्बैट फ्री फॉल विशेष बलों को दुश्मन के क्षेत्र में वायु मार्ग से प्रवेश कराने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है, जिसमें अत्यधिक नियंत्रित पैराशूट का उपयोग किया जाता है। ये साहसी तरीका उन दुश्मन क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है जो कड़ी सुरक्षा में होते हैं और जहां जमीन के माध्यम से प्रवेश असंभव है। समुद्र में हमारे बहादुर मरीन कमांडोज एयर ड्रॉप की गई नावों के साथ कूदते हैं और शत्रु को निष्क्रिय करने के लिए मिशन को अंजाम देते हैं। This daring method is used against heavily guarded enemy areas where land penetration is impossible, or at sea where our brave marine commandos jump along with airdrop boats to neutralize adversaries. The combat free fallers are being led by Rajan, Master Chief Petty Officer. ఈ బృందానికి నాయకత్వం వహిస్తున్నది రాజన్, మాస్టర్ చీఫ్ పెటీ ఆఫీసర్ సెకండ్ క్లాస్. विशेष बलों के जवान लगभग 24,000 फीट की ऊंचाई से कॉम्बैट लोड के साथ एयर ड्रॉप किए जाते हैं और निर्दिष्ट लक्ष्य पर सटीकता से उतरते हैं। कॉम्बैट फ्री फॉल हेलीकॉप्टर जैसे मिग-17, सी किंग और एएलएच, साथ ही C-130 के साथ किया जाता है। देवी और सज्जनों, आप देख सकते हैं जसवीर सिंह राजपुरोहित C-1 मरीन कमांडो जमीन पर लैंड कर चुके हैं और अब वे माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ఇప్పుడు ఆకాశం నుండి కిందకి దిగిన జస్వీర్ సింగ్ రాజ్ పురోహిత్ C-1 మరీన్ కమాండో స్మారక చిహ్నాన్ని గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రికి అందజేస్తారు. The Special Forces personnel get airdropped from a height of about 24,000 feet with a combat load and land with accuracy onto a given target. Combat free fall can be carried out from helicopters like Mi-17, Sea King, and advanced light helicopter, as well as fixed wing aircraft like C-130, AN-32, and Dornier. Ladies and gentlemen, now you're seeing a brave and daring Marine Commando presenting a memento to the Honorable Chief Minister. मंच के सामने तीव्र गति से गुजरती हुई ये दो ISVs टैंगो 40 एवं टैंगो 35 हैं। इनकी कमान क्रमशः लेफ्टिनेंट कमांडर KN षणमुख एवं लेफ्टिनेंट कमांडर नवनीत यादव ने संभाली है। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। ఇప్పుడు భారత నావికాదళం యొక్క చిన్నవి కానీ వేగవంతమైన 2 యూనిట్లు మన దగ్గరకు వస్తున్నాయి. Ladies and gentlemen, now approaching us are 2 small but fast units of the Indian Navy. These are power-packed immediate support vessels and ferocious fast interceptor crafts built for security after the 26/11 Mumbai attacks. Ladies and gentlemen, right in front, we have the mighty warships in a column formation. We are about to witness the landing of helicopters on these ships. In the lead is a stealth frigate, INS Sahyadri, commanded by Captain Rajat Kumar, ready for landing by a Chetak helicopter, piloted by Commander Arun Raj. The mighty destroyer, INS Mysore, is next, piloted by Commander Subrat Tripathi. The next in the formation
is the first indigenously built destroyer, INS Delhi, commanded by Captain Cyril Matthew, ready to recover the advanced light helicopter being piloted by Lieutenant Commander Vikas. Last in the formation is a stealth frigate, INS Satpura, commanded by Captain Vikas Garg, ready to receive a seeking helicopter.